Good morning, students. So, where are the rest of the students from your class? I did see you attending that webinar. So, we'll wait for a minute or two, let them join. All right, so today's class will be a bit shorter, ठीक है, क्योंकि अपनी class थोड़ी late start हुई है, तो अपा कल वाला complete कर लेने हैं. So, out of you 5 students, सारे दा हो गया सी वो test personality वाला? Yes, ma'am. हाँ जी, okay. सुधांशु, करण, गुरप्रीत. Done, ma'am. All right, Arvind. होता क्या है बट सबमिट नहीं हो रहा है. ओके, सबमिट नहीं होया. चलो, नो प्रॉब्लम, अपा देख लेने हैं. So, Sushant, good morning. I am seeing you in the class after a long time. What happened? Everything fine? गुड मॉर्निंग मैम. यस मैम, वो मैम थोड़ा मैम वर्क में बिजी था पापा के साथ, Okay, इसलिए. okay. चलो, no problem. I hope health-wise Yes. everybody is fine at your place. Yes ma'am, yes. All right. So, in case since you missed, I think 2 or 3 classes, right? So we had started with the discussion of personality, and I had given them one test to attempt as well. And today I'm going to discuss about that test only, right? So I'll share the link here again in the chat, and you can attempt it in at your own free time. Okay, whenever you find the time, you can attempt it. Or rather, I'll share the PPT with you today. इसमें उसका link है, ठीक है बेटा? एंड इवन फॉर अदर्स, अगर आपका जैसे यू आर सेइंग के सबमिट नहीं हो रहा था, राइट? सो यू कैन ट्राई इट लेटर. हाउ एवर, जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टेस्ट. उसमें these 4 dimensions are being measured. Now we'll take a look at all of these dimensions one by one. So first it will tell you about introversion versus extroversion. Right now intra को कई बार introversion भी लिखा जाता है. Now from where have these words come? You must be familiar with the words introvert, right? Extrovert. Just to describe us, हम कई बार कह देते हैं that person, she is a bit of an introvert, right? Somebody who likes to be, जैसे another word is कि she is of a reserved nature. Somebody who's not too talkative, or they're not too open about themselves, right? They're not keen on talking about themselves. They take time making friends, they take time being comfortable, sharing stuff. ठीक है, sharing stuff as in sharing जैसे बातें वगैरह, not कि sharing your physical stuff, right? So we term those people as introverts. Introverts, they usually like to engage in activities which involve only themselves or less people. They're not too comfortable, I won't say comfortable, but they would prefer a smaller group than a bigger group, right? So they won't like to be the center of attention, they like to be on the side. However, जो extroverts होते हैं, these people are very outgoing, they are talkative, they love talking, they love making friends, they are able to make friends easily, they are able to comfortably settle in a new group, right? Group चाहे बड़ा हो या छोटा हो. In this test which you just attempted, right? So this measures where you stand between introversion and extroversion. Now this, think of it as a spectrum. ठीक है, ये एक रेंज है. ठीक है, रेंज में हो सकता है आप ज्यादा इंट्रोवर्ट वाली साइड हो या ज्यादा एक्सट्रोवर्ट वाली साइड हो. ठीक है, ये एक कंप्लीट जैसे वो नहीं है. एंड देयर इज अनदर न्यू वर्ड, आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू. जैसे आजकल ये वाला वर्ड भी काफी यूज हो रहा है, विच इज एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट कौन से पीपल होते हैं? who are neither completely introverts nor are they complete extroverts. They are somewhere in between. So let's say if the situation requires you to be social, yes, you can be social. Otherwise you like to be on your own, you like to do something which involves less people, or maybe you like activities जैसे reading हो गया, या some going on solo travels, solo walks. ठीक है, मतलब you're happy with your own company as well.
एंड यू डू नॉट प्रेफर, ऐसे आपको ये नहीं होता कि हमेशा मेरे को ग्रुप चाहिए ही चाहिए. जो आउटगोइंग पीपल है ना, दे लाइक टू बी इन अ ग्रुप, दे आर मोर सोशल. So this is also a measure about how social you are, right? So I hope you got a rough idea of what introversion and extroversion means. In case you want me to elaborate further, I can do it for you. हाँ जी बच्चे. So I think you might have noticed even in the test, there were some questions जिससे आपको पता चल रहा था. जैसे I believe there was a question that I like to be, at the center of attention, right? I like the people to give attention to me. ऐसा भी कोई question था. So all those questions were meant to test or meant to measure whether you are an introvert or an extrovert. अब one disclaimer here कि इनमें से ना कोई trait ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है. All traits are good, right? All traits are, let's say, since they are what we are as people, so we can't say that this is a good thing or a bad thing to have. ठीक है, it all depends on how you are managing it. अब कोई situation होगी where you are required to be an extrovert. Let's say you are the PR manager of your company. Now your job is to connect with people, right? To listen to them. कुछ आपने उनसे connection बनाना है. You have to promote your company. Now professionally, you might be required to interact with people, and yes, you have to be comfortable doing that. However, हो सकता है आप अपनी personal life में still you have a very small group of friends and you like to interact with less people. You are not so outgoing and making new friends every day, right? So इसमें ये कोई बुरा and वो वाली बात नहीं है. These are simply traits. This is who we are as people, ठीक है? And everybody is different. So इसमें ये नहीं कहना कि prefer क्या होता है extrovert या introvert. Yes, there is some kind of, for some jobs they would want people who are outgoing naturally. But other than that, even if you are, let's say, an introvert, a very reserved kind of person, if in the professional environment you can still make connection with people and you can at least be outgoing for that particular time, so that is all good, right? So it won't matter कि आप अपनी personal life में कैसे हो. Similarly, there was this dimension about sensing versus intuition. Now in case you had read about your results, अब इससे ना आप अपने results भी interpret कर सकते हो. जैसे उसमें ऐसे दिया हुआ है INFJ, मतलब INFJ is a combination of introversion, intuition को N के साथ डिनोट किया गया, F is for feeling, J is for judging. ठीक है, ऐसे कुछ और होगा ENFJ या ENFP. तो ये सिर्फ बताया गया कॉम्बिनेशन ऑफ विच, इनमें से आप कौन से डायमेंशन में ज्यादा फॉल करते हो. दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन. दिस इज जस्ट अबाउट विच डायमेंशन यू आर क्लोजर टू, राइट? एंड दैट ऑल्सो एज पर द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट. अब ये आपने कितना ऑनेस्टली दिया या कौन से आपने माइंडसेट से दिया है या आपने कितने स्पॉन्टेनियसली आंसर्स मार्क किए, सो ऑल दैट ऑल्सो is going to determine the result. ठीक है, so I wanted to make this clear that you are not supposed to take this test or the results too seriously. This was just for an idea, just to give you an idea कि personality traits कौन से होते हैं, what are the various dimensions which are measured. ठीक है, ऐसा ही अगर आप कोई और personality test दोगे तो उससे आपको क्या क्या पता चलने के मतलब वो है possibility है, right? So just I'm going off the track a bit, but I wanted to tell you, जैसे some personality tests हैं, ये सारे ना different psychologists ने बनाए हैं, right? So there is one personality test and these are dependent on what theories they give. So एक test है which is measuring 16 different traits, right? उसमें 16 dimensions are there, this versus this versus this, and you get to know which dimension you fall in, right? So talking about sensing versus intuition, so sensing would be people who go by their senses, right? Now our senses are our eyesight, our sense of smell, sense of taste, sense of touch, sense of hearing. So sensing में है कि आप ज़्यादा rely करोगे on the evidence which is right there available to you. What you heard, what you can see, what you can feel, right? So as per that you are taking your decisions. That is people who are falling more into the dimension of sensing. Intuition है who go by their gut feeling. Let's say in front of you you can see that okay, the road is मतलब empty for now, the traffic is clear. However, you get a gut feeling कि नहीं आगे I might get a traffic jam, right? So as per that you decide to take a different route to college, right? So that means you might rely more on what you feel, what is your intuition, rather than what you could sense. Now you could sense, you could see the road is clear, there is no traffic,
कई बार ऐसे होता है, यू माइट हैव नोटिस्ड इन डेली लाइफ के वी गेट एन इंट्यूशन के ओके आगे देयर कुड बी अ नाका, सो आई मैंने हेलमेट नहीं डाला यहाँ, आई डोंट हैव दिस डॉक्यूमेंट, और जस्ट लाइक दैट टू अवॉइड दैट नाका एंड चेकिंग यू माइट डिसाइड टू टेक अ डिफरेंट रूट. सो दिस हैपेंस विद यू, मतलब कई बार ऐसे इंट्यूशन होती है. डू यू फील दैट? हाँ जी, व्हाट डू यू से? Yes, ma'am. Yes, we do. And how many times do you actually follow your intuition? Would you say that you follow your intuition more, or do you go by what you can actually, see the evidence out there? Intuition. Okay, so you follow more of your intuition. ठीक है. So this is, different for all of us. कई बार हो सकता है कि some people they prefer going by the senses, कि उन्हें जो कुछ दिख रहा है, feel हो रहा है या कुछ वो they can, see the evidence out there. Some people tend to follow their gut feeling, जिसको कह देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ये होगा, and they tend to go by that, take their decisions by that, right? Then another dimension that this test measured was thinking versus feeling. राइट. अब ये वाला इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज हेड वर्सेस हार्ट, राइट. थिंकिंग इज के आप ज्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हो, कि थिंक मतलब थोड़ा लॉजिकल देख के, रीजन देख के. फॉर अ वेरी गुड एग्जांपल वुड बी कि आज क्लास बंक करनी है या नहीं करनी, राइट. अब उसमें क्या होगा, द पीपल हु आर मोर इनटू थिंकिंग दे वुड से ओके आज मतलब टॉपिक कौन सा होना है, इजी होना है या मुश्किल होना है, ये मेरे से मैनेज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है. अगर मेरी इसमें इस लेक्चर में मेरी अटेंडेंस तो नहीं शॉर्ट, ठीक है, मैम से डांट तो नहीं पड़ेगी, कुछ मेरा और पेंडिंग तो नहीं है, अगर मैं बंक करती हूँ या करता हूँ व्हाट एल्स वुड आई डू. So these, in case your decision making is somewhat like that, then it means that okay, in this situation you are more into the thinking part. अब feeling में क्या होगा, a person who is more into taking decisions by the heart, कि मेरा दिल नहीं कर रहा लगाने का lecture, so I am not attending it. That's all, right? So ऐसे in various situations we take a different approach as per the situation, right? In some situations you might prefer to go by the logic, reason, think thoughtfully, think wisely about it. In some situations you just go by the feeling. For example, if you are going out or ordering food at your home, I think we usually go by feeling के क्या खाने का दिल कर रहा है. हम इतना सोचते तो नहीं है कि मैंने पिज्जा पिछले हफ्ते भी खाया था, इस हफ्ते ये वाली चीज खा लेते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं होता. यस एनीवन? नो मैम. है ना, वी डू यूजली गो बाय जस्ट के हमारा क्या दिल कर रहा है खाने का, वी ऑर्डर दैट, और इवन इफ वी आर मेकिंग इट एट होम वी जस्ट डिसाइड व्हाट वी आर फीलिंग लाइक मेकिंग एंड वी प्रिपेयर दैट डिश, राइट. सो दिस डायमेंशन टेल्स अगेन, इसमें अब नो एब्सोल्यूट देयर इज नो एब्सोल्यूट लेट्स से बेंचमार्क अबाउट हाउ यू वुड टेक योर डिसीजंस. मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वी माइट टेक बाय थिंकिंग, सम विद फीलिंग. तो इसमें भी जो आपका रिजल्ट आएगा ना, दैट वुड जस्ट टेल के ज्यादा लाइकलीहुड किस चीज की है, ज्यादा परसेंटेज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग कैसी है, ठीक है, वेदर इट इज बाय हेड और बाय हार्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. ऐसा नहीं है कि आप सारे डिसीजन फीलिंग से लोगे या सारे ही आप ऐसे सोच समझ के लोगे, नो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. एंड यस, व्हाट वुड बी योर प्रेफर्ड अप्रोच. अब जैसे ये बंक मारने की बात थी, तो इसमें आपकी प्रेफर्ड अप्रोच क्या होगी, आप कैसे सोचते हो. सो दिस इज व्हाट दिस टेस्ट वुड टेल यू, राइट. सो आपके वहां पे रिजल्ट्स में एफ होगा, या आई थिंक जैसे वो जो आए हुए हैं ना मतलब दोज एब्रीविएशन, सो उसमें या तो टी या एफ मेंशन होगा, राइट. देन वी हैव परसीविंग वर्सेस जजिंग, राइट. सो व्हाट डू दीज मीन्स. परसीविंग में होता है कि ओके यू थिंक अबाउट थिंग्स, यू परसीव, राइट. आपकी इमेजिनेशन कितनी एक्टिव है, राइट. अगर आपको कुछ जैसे कोई पिक्चर दिख रही है या क्लाउड्स है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, देयर आर क्लाउड्स, जैसे वो आपने व्हाइट वाले कॉटन कैंडी क्लाउड्स देखे, राइट. तो अगर वो वाले क्लाउड्स हैं इन द स्काई, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम. अब कोई जिनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, दे माइट थिंक ओके दिस सीम्स लाइक दिस सीन, और दिस सीम्स लाइक दिस एनिमल, दिस क्लाउड्स लुक्स लाइक दिस थिंग, है ना. जो जजिंग होगा दे माइट बी गोइंग बाय के नहीं ये तो सिर्फ एक क्लाउड है, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट. So perceiving versus judging is more a measure of how imaginative you are, how creative you are, and what is your approach to all these things, what is your perspective, right. So this was about perceiving versus judging. Now all those questions they जो हमारे ये personality tests होते हैं या any psychological test to measure your IQ,
to measure your, let's say we have tests to measure anxiety level or to measure कि आपका मतलब mental health कैसी है, there are different उसमें dimensions. So उनमें क्या होता है ना, the questions are constructed and decided as per what dimension is to be measured. So even in this test, no doubt you might not be able to notice. However, there are questions which are measuring this dimension. There might be questions which are measuring this dimension, right? So you'll have all the different. I think around there were around 60 questions, 60 65, right? So all of them would relate to one or two of these dimensions. So I think now that I have explained it to you, you will be able to interpret your results better, right? You will be able to see, okay, what is the meaning of those results and what is the meaning of these words, right? So do you want to ask anything related to this test? Yes. Anything you might want to discuss related to your results? हाँ जी बच्चे. So I hope it is not getting too technical, too psychological. No, ma'am. Right? So I am trying to simplify it for you so that you can follow. Right? So now you will be able to read your results better. जो भी वहाँ पे आया था ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आया कि इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन. एंड आई बिलीव इन दैट टेस्ट इट ऑल्सो रेकमेंड्स दैट किसी में कुछ लिखा हुआ है कि यू आर अ गुड टीचर और समथिंग. दे आर मतलब नॉट exactly a teacher, maybe teacher in the whole scheme of thing. If we look at life itself, that yes, you are some kind of a person who is also giving direction to others, right? तो उसमें मतलब टीचर वाले वर्ड का ये मीनिंग होगा. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. Let's discuss, okay, how does this help? Now that you attempted this test, you might know yourself better after this test. So how is it going to help you? हाँ जी बच्चे, what is your view? Come on, think of it. How will this be? Okay, do you agree that no, after this, once you know your results, आपको कुछ difference feel होगा या okay, now you are more aware of what kind of person you are? Is that so? Ma'am, yes. है ना? And applying that knowledge क्या हो सकता है? Now I'll just give you this tip that whenever you are behaving in a social context or within your family, with your friends, or at a professional place, you can monitor your own behavior better. ठीक है, अगर आपको पता है कि ओके आई एम मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये टेस्ट ने आपको कुछ न्यू नहीं बताया होगा. यू ऑलरेडी माइट बी अवेयर ऑफ this thing के whether I am more social or not, whether I like to be with a very large group of friends or I am a person who has few friends, very close friends, right? तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा अपने बारे में. However, now how can this help? You would know that in a particular situation what makes you uncomfortable, right? क्या चीज होती है कि जो आपके आउट ऑफ कंफर्ट जोन होती है, and you would now know why is that so, right? And accordingly you can work on it. You can adapt yourself to those situations that okay, even though I am an introvert, I don't like interacting with new people that much, or I'm not comfortable interacting, it takes me time to be comfortable. However, आपको जब ये knowledge होती है ना, then you can adapt to that situation better. आपको अगर होगा कि ओके इन दिस सिचुएशन आई एम सपोज टू इंटरेक्ट या कुछ भी है, तो आपको यू विल ट्राई टू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, टू रिप्लाई टू द अदर पर्सन. एंड ऑल्सो आप बाकी लोगों को भी बेटर अंडरस्टैंड करते हो वंस यू नो दीज ट्रेट्स. ठीक है, अब आपको अपने फ्रेंड्स में भी आप सोच सकते हो कि हु आर द वंस जो ज्यादा फीलिंग से जाते हैं, राइट? हु आर द वंस हु गो बाय देयर ओन इंट्यूशन, हु आर द वंस हु आर वेरी आउट गोइंग, right? So this is just understanding ourselves better and people around us better, and accordingly we can adapt our behavior to the situation. ठीक है, अब this is not कि आपने वो जैसे and okay, so we'll also come to the question of why the need for personality assessment, right? So इसमें क्या होता है कि आप once you know yourself better, you understand yourself better, as per the situations you can adapt your behavior and be more comfortable in those situations, right? And make the best of those situations. ठीक है, so now let's come to this idea of why the need for personality assessment. So you guys tell me, हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था that our various exams they have this whole section of personality assessment.
सो सम वेरी मेजर एग्जाम्स आर, जैसे यूपीएससी में हो गया, देयर इज नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट एज सच इन द रिटन फॉर्म. जो इंटरव्यू होती है उसी को पर्सनैलिटी टेस्ट काउंट किया जाता है, राइट. देन वी हैव द एनडीए. इफ यू आर फेमिलियर विद द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एनडीए, आपको पता होगा कि 7 days उनका कोई प्रोसीजर होता है, राइट. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द डिटेल्स बट आई डू नो दिस. And they have multiple personality tests for the candidates, right? Even if you are applying after your graduation or even directly after your plus two, right? तो आपका उनका ना SSB बोलते हैं उसको. तो 12 या 7 days 6 days की होती है. Every day you have a different task to do. Every day they are screening out certain candidates. Only the candidates who are able to make it to the 6th or 7th day, they are finally selected. इन केस यू आर फेमिलियर, एनडीए में काफी कम सीट्स है, राइट, अराउंड 200 और 250, ठीक है. एंड उसी से आगे फिर डिवाइड हो जाता है कि आर्मी, नेवी एंड फॉर एयरफोर्स, राइट, एंड फॉर स्पेशल फोर्सेस. तो उसमें देखो उनका तो सारा टेस्ट ही डिपेंडेंट ऑन पर्सनैलिटी असेसमेंट है. वाई? बिकॉज फॉर अ करियर इन द आर्म्ड फोर्सेज दे नीड पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट. अब वहां पे हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा. लेट्स से इफ समबडी इज मोर इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स, अब उस पर्सन के लिए आर्मी लाइफ इज नॉट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि आर्मी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा फिक्स्ड रूटीन है. So somebody who's very creative, who likes to do things on the spur of the moment, कि on the spot plan बना लिया, चलो इधर घूमने चलते हैं, right? For them, army life might not be a good idea, क्योंकि उनको वो लाइफ बहुत बोरिंग लगेगी, बहुत रिस्ट्रिक्टिंग लगेगी, ठीक है. Some people who like that disciplined life, who like to go by planning, कि पूरा शेड्यूल बना के ही जाना है, नॉट कैसे ऑन द स्पॉट कहीं भी चले गए, उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड फिट, right. Now this is just one example. For this job they look for other personality traits as well, ठीक है. इसीलिए जो हमारे ये एग्जाम्स होते हैं, जो रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, इसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. सो एनी अदर एग्जाम्पल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? लाइक आई टोल्ड यू, एनडीए एग्जाम इज देयर, यूपीएससी एग्जाम्स आर देयर. हाँ जी बच्चे, एनी अदर एग्जाम? यस, डू थिंक ऑफ इट. आपको, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा. हाँ जी. ओके, हैव यू हर्ड ऑफ मर्चेंट नेवी? Yes, ma'am. Yes, you have heard. So even for merchant navy selection, like no doubt it is dependent on the institute as well. However, the good institutes, they do conduct their own personality assessment tests as well. एंड उसमें पता कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे कि ओके दिस इज द सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस. अब वो उसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होगा, इट इज ऑलवेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, राइट, विच विल टेल के ओके व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. For example, I'll give you another example which I just, it came to my mind. For your test in NDA, there's also a column of mentioning your best friend, name your best friend, ठीक है. अब what is the idea for asking this? अब कोई होगा कि I don't have best friend, ठीक है, वो ये आंसर दे देगा. कोई लिखेगा कि I have many best friends, ठीक है. कोई स्पेसिफिक नेम लिखेगा या कोई स्पेसिफिक 2 नेम लिखेगा. Now what is the idea for asking this question? The idea is they want to know which person are you going to be completely loyal to, which person you would try to save their life in case there is a difficult situation or there is a threat to their life. So idea of asking your best friend is कि ठीक है, if you name a particular one person or 2 people, so this means that these 2 people are close to you, right. In case you are saying I don't have any best friend, that means that okay, you are not too close to anybody, and in a difficult situation you might just prefer to save your own life, right. So similarly, even for the merchant navy exam, there is this test of personality assessment, and there are some very random questions, just like I mentioned this one, और situational questions कि आप इस situation में क्या करोगे. अब वहां पर क्या होगा कि आप वो टेस्ट दे रहे हो ना, उसकी आप कोई प्रेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे यू हैव टू गो बाय व्हाट आंसर आपको सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है, कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, राइट. एंड उसी से जो वहां पे आपका एग्जाम ले रहे हैं, they get to know whether you are made for this career or not, right. So in case you are familiar, in merchant navy you have to stay away from your family for very long, rather not even your family, even normal the routine life, you are sailing for 6 months at a stretch, right. आप वही 22 जो जितना भी क्रू है शिप का, उसी के साथ आपने एडजस्ट करना है, right, उनके साथ ही रहना है. Even if there are differences of opinion, you have to make do somehow. So just to know whether you are good fit for that career or not, they take this test.
Also for some of our leading companies, right, Tata Consultancy Services, yeah, any other companies which you might also apply for, some of those companies also have personality tests for particular posts, right? So this is why I would say that yes, knowing yourself and being comfortable knowing yourself is very important, even in professional terms, right? So now let's talk about working on your personality. So I think this we can take up in the next class, since I think your break is about to start, right? So that was all that I wanted to discuss, that about the results of the test that you appeared for. And yes, I'll share this PPT, or otherwise I'll just share this link with you in case those of you who could not, you know, or you face some problem appearing for this test, you can try it later. ओके बच्चे, आप इसको ना कॉपी पेस्ट कर लो लिंक को, ठीक है, ऑल ऑफ यू, और दोज ऑफ यू हु आर येट टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट. कोई कंपल्सरी नहीं है, दिस वाज जस्ट फॉर just introducing the topic to you, and just one test which I felt is okay that you can take this up on your own, right? So that was all for today's class. I hope you have copied the link. All right, so I will end the class now. In case you have any questions, any queries, anything you might want to discuss or you want to share, you are most welcome to do that. हाँ जी बच्चे. Yes, anything you might want to ask. All right, any doubt about the test you appeared for, or anything related to the discussion we had today? So that was all, right? So may I end the class now, Yes, ma'am. right? So Yes, ma'am. Thank you. all Thank you, right, ma'am. all right. So I really like that some of you are really attending the classes regularly, right? Keep that up. So we'll see you in the next class, and we'll continue from this discussion and take up something new as well. So thank you and goodbye.